Okay. Hello, everybody. Welcome back. So, good afternoon, guys. We are into our next session on Java, the complete Java tutorial, and this is OOPS revision. We're going to do some revision of OOPS concepts, and not only that, but because we have already left with one of the topic, which is encapsulation, so we are going to also talk about that as well, right? So this session will be again a very interesting one because the other three sessions, the previous three sessions are also very interesting, have been gone through it, and it was really nice talking to all of you and guiding you in how these OOPS concepts works, right? So welcome back, guys, in this particular playlist. Those who are new here, just I'll give you a particular idea about what is happening. So we are CodeBeyond channel. We are providing different content on different programming languages, and here I am with front-end programming. So already I've covered front-end programming. There's a playlist which is there in CodeBeyond channel. If you have not seen it, please go ahead and watch it. There's a playlist called as front-end programming. You can see there, if you want to become a front-end developer, you can go ahead and learn HTML, CSS, JavaScript, and Bootstrap from there, right? And this is a complete Java tutorial playlist. So in here, I'm just completing all the core and advanced topics of Java programming language. So here, what is my plan is to cover from core to advance everything, and we have already covered many of the things here. So this is the lesson number 15. We have already covered 14 sessions till now, right? So here what we are going to do is we are going to understand about OOPS concepts again. Just one recap we will do. We'll try to have a look at which one topic is important, which one is not, and all of those things. And not only that, but also we are going to learn about encapsulation. So let's not waste time and let's go ahead with it. So let me introduce myself. My name is Ritwik Raj and I'm a corporate trainer. I've also worked as a subject matter expert and a research analyst in most of the edtech companies. I have 3+ years of teaching experience and I've trained graduates and corporate employees from Medicine Capgemini. I've trained more than 30 students till now offline and a million of learners online. Subjects which I take is mostly into front-end development, backend languages, database languages, interview tips and tricks. Those all things I have done. Also, there is a interview preparation tips and tricks guidelines playlist which is there in CodeBeyond channel. So if you've not seen it, please go ahead and watch it so that you can have a understanding of what all things you need to do when there is an interview ahead, right? So suppose if you have an interview next week, you can go ahead and watch those sessions now so that you get an idea how to prepare yourself for that interview, right? So please go and have a look so that you can understand what's happening there. Also, you can use my code RIT10 to get a free level sample test paper. If you do not know what is a level, don't worry. In just 1 minute, I'm going to tell you about that. But if you do know about it, you must be knowing that you have to give an actual Relevel test, right? So you can give that by using this particular sample paper. It will help you to understand what kind of questions will be asked in the actual test paper. So now let's talk about the Relevel actual. What is this Relevel? So Relevel is a product by Unacademy, which is providing different exams and different hiring opportunities. So why this particular product came into the market? The reason being, many of the times what happens, candidates miss out on great opportunities. Maybe their resumes are getting rejected because they have different degrees. Let's say they are from BSc or BCom graduate and they want to move into IT industries. They have the skill sets, they have the practical knowledge, they have done the projects as well, but still their resumes are getting rejected just because they have some different degree, right? Also, there are some people who have done engineering who are B.Tech graduate, but still their resumes are getting rejected because of their tier 3 college. They are from tier 3 college, and that's why this happens. So this is also a very foolish reasons, because tier 1, tier 2 college, maybe they are not smart, and maybe tier 3 colleges students are much more better than tier 1, tier 2. So these all things are the reasons why Relevel came into the picture. So we are introducing Relevel. It is India's first test hiring platform by Unacademy, which is helping job seekers find their dream jobs. So you can get a job basis on your skill and talent. You do not have to depend upon any degree or any other people in your network. Okay. Also, the benefits of participating in the Relevel test is that you will be giving a free test. It will be of 1,000 marks. You have to score above 700 to get eligible for the profile. Once the profile will be created, we will share this particular profile with all our client companies, and those people have 1,000+ positions across business development, backend development, front development. So it will be very easy for you to go ahead and get interviewed and get hired, right? So with Relevel, you're in a unique position to invite interest from companies instead of hunting for opportunities on your own.
Also, you can register for Relevel. This is very easy. What you have to do is you can see one link in the given description of this video. So you can go ahead and click on it. It will take you to relevel.com where you have to put down your mobile number and your OTP. Once you do that, you will find these tests of your choice. You have to select one of them. Let's say that you are very good in backend. You can click on that and then you can move ahead and book a slot. So you have to book a slot when you want to give the level test. Slots are limited, so I suggest you to book it fast. Once you book this particular slot, you have to fill in the details for the admit card. So you have to fill in the full name, email ID, birth year, current state, and all of these things. And then you can go ahead and click on the referral code. You have to put down the RIT10, which is my coupon code, and you can click on apply, and then you can click on create account. Once you do this, your account will be created with the sample paper. So as you can see, it will look something like this. Also, you can download the sample paper. You can check out what all questions have been asked there, how it is will be in the format, and what all different questions will be asked, whether it's an MCQ, whether it's subjective, or whether it's programming basics. All those things you'll get to know, you'll get an idea, and it will really help you in cracking the Relevel actual test. So do not wait, go ahead and register for Relevel right away. If suppose you've already done this, you have already done the registration, then all the best for the exam. If you've not done it, go ahead and do it. If you're thinking that 1000 mark is much more for you and you don't have those skills to crack this exam, so what you can do is you can go ahead in CodeBeyond channel, check out all the videos in there and check out what is happening, what all educators are teaching which particular topic at what time. Upskill yourself. When you can think that okay, I'm ready, you can go ahead and register for E-level. Okay. Also, please join the Telegram channel. Telegram channel link is given in the description as well. You can join it so that all the notifications which I'm giving when the session is coming live, is it preponed or postponed, everything will be told there so that you get an idea and you can join that particular session in time. So please subscribe to the CodeBeyond channel and also hit the notification bell so that you get an update and notifications in your YouTube app as well. Also, please like and share so that more and more number of people will be able to get to know about this free content, right? So we are going to do the OOPS revision, but before that, we are going to understand about encapsulation as well. So we'll talk about it. Hi Somu, good afternoon. Hey Chicken. Sir, can you teach us association, composition, and aggregation in classes? Yes, we can. We will teach you that, but those are coming in our inner class topic, where I have done a miscellaneous topic. So there I'll take you to these concepts. These are mostly known by you. This is nothing but related to inheritance. You know some of the things from here, but yeah, aggregation is something which you should be knowing now. So I will tell you about that. Don't worry. Maybe in upcoming classes, maybe I think I have inner classes on 30th. So I think 30th evening, I'll be talking about these topics, right? Now, so quickly, I'll just tell you what all things we have done. We have studied about so many concepts in Java right now that our core Java is completed, right? Our core Java is already done. I mean, all the concepts and all the exceptions which we have seen, all the different cases which we have seen, we have quite now known about all our OOPS concepts and how does it work, right? Not only those, but also some of the keywords as well, correct? Now, if you have not seen the earlier sessions, if you are new here, then please, I suggest you to go back and click on CodeBeyond channel, click on the playlist, check out various complete Java tutorial playlist, and go ahead with learning all the concepts, all the sessions. Check it out because our students are there who are watching it every day, and their response is really good. They are understanding all the concepts very easily because the type of examples which I have taken is very easy and it will just be there in your mind always permanently, right? Now, so coming to our new topic, which is encapsulation, because one of the important concept was encapsulation, which was left out. Why this I'm covering at the last? Because this doesn't need much more explanation, right? When you talk about all our different OOPS concepts, let's say inheritance, polymorphism, or abstraction, right? These all are some of the concepts which are logical, or we can say that concept based, right? Here in this one, this is also concept based, but again, this is very easy to understand. So you don't have to do a lot of things here. This is very easy for you to understand it. It's just that here we use access modifiers to do some programs, okay? Okay, am I back? I'm back. Yes, perfect. Fine, let's go. Sorry, I think my Wi-Fi just got
some problem. That's fine. I think I'm back. So have a look at it. What is encapsulation? Wrapping the data and code together in a single unit is called encapsulation, right? So this is a very bookish definition. Again, you want to say it, you can say it, but you won't be unique then. So I've told this already, that do not use the bookish language, because you need to be unique in your interviews. So you have to frame your sentences, you need to frame your definitions by your own. Whatever you know about that concept, then frame it in your own manner, right? If you know the concept, you can frame your definitions in your own manner. So that's what you have to do. Wrapping the data and code together in a single unit is called encapsulation. What does that mean? That means I want all the data and the code and the logic and the concept all together in one particular class or in one particular single unit, right? So class is also a single unit. So that's what is encapsulation. But this particular definition is having so many things inside it, okay? This particular definition is having so many things inside it because wrapping the data and code together in a single unit, this can be anything, right? Because from this starting, whenever I have started teaching Java, I am doing that. I'm writing a class, I'm putting the data members, I'm putting the methods. So in a class, data and units, data and codes are together. So is that an encapsulation? No, right? Everything is not encapsulation. So what is the meaning of this particular line? So we'll understand that once we'll do the programs. Fully encapsulated class can be created by making all data members of the class private. So here is one rule which you need to follow. So what you need to follow is that if you are creating a fully encapsulated class, what you need to mention it, you need to understand that all data members of the class is private. Okay. Now please understand, all the data members are private in the sense what happens. Suppose you have a class and you have I and j which are data members. That means the variables, right? So those I and j variables, what you're doing, you're making it private. Making it private in the sense what? Private means it will be in its own region. So nobody, no other class or no other object can access these variables, right? No other class or object can access these variables. These are private to only that class. These variables can only be used inside that class, nowhere else. Okay, nobody can also access those variables, correct? So the reason of being the variables as private is what? Now let's understand what is the name here. I have already told you that in Java, every word have a meaning. So if you understood the meaning, then you can understand the concept as well. So when you talk about encapsulation, the name comes here from the capsule. Can you see? There's a term which is capsule inside this, right? So capsule is what? Capsule is a cylindrical kind of medicine which is having two caps, and two caps can be locked, and inside that you have mixed chemical powders, or you can say medicines, right? So that powders are mixed of many medicines, right? And then they put it inside that cylindrical tube so that, you know, people can just swallow it and they can and it will help you, like whatever problem you have, right? It can be sorted. So why is it covered in a tube? Why that powder I can't take directly? There must be some reason, right? Correct. So that is one thing how you can actually understand encapsulation. First example. Second example, because all the powders which is inside that tube will be always only inside that tube, right? Right? All the powders, all the mixed powders will be always inside that particular tube. So what is the meaning of that? The meaning of that is that capsule is private. That powders are private to that capsule. करेक्ट? आप ऐसा नहीं करते हो ना कि आप उस कैप्सूल को खोलते हो, फिर पाउडर को नीचे रखते हो और फिर उसको कहीं और किसी और सिलेंड्रिकल ट्यूब में डाल के फिर खाते हो. ऐसा तो नहीं होता है. You don't do that, right? So you are not allowed to open that particular capsule, correct? Same thing happens here. When you create a class and when you have private data members there, you are not allowed to open that class up so that it is accessible. It can be accessible by any other classes. No, you are not allowed to do that. You cannot do that. So आप इस चीज से याद रखो, इस एग्जाम्पल से याद रखो कि इनकैप्सुलेशन में क्या होता है. All the data members of your class is private. Because it's a powder, it should be inside that particular class itself. That's why it says that wrapping the data and code together, right? Wrapping the data and code. Data is nothing but your data, the variables, the data members. That's what is data members here. Okay. Now we'll also understand. So अब suppose अगर मेरा class के अंदर data member private है, अब मैं उस data member को access नहीं कर पाऊंगा.
मतलब कि मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके आई या जे के वैल्यू को प्रिंट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड बट दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट अलाउड टू fetch the value of that particular variable because that is private. We cannot have an object which will talk to that particular variable. We cannot do that. So अगर मुझे i और j का वैल्यू प्रिंट करना है तो मैं कैसे करूं? How can I do that? So you have something called as getter and setter methods. Now please understand what is this getter and setter methods, because ये बहुत ज़्यादा यूज होता है सर्वलेट, JSP और स्प्रिंग हाइबरनेट, मतलब फ्रेमवर्क्स में. जब आप एडवांस जावा पढ़ोगे, when you are learning frameworks, these are the things which will really help you. And trust me, most of the time आप अपने कोड पे इनकैप्सुलेशन ही कर रहे होंगे. ठीक है, most of the time you will be doing encapsulation in your codes. This is the most not known OOPS concept, but in general use, you use encapsulation every day in your Java code. ठीक है. By using getter and setter methods are used to get and set the data in it. So basically getter and setter methods are, get methods are to get the data. If you have a data, you get it. Okay. Set means you set the value. Why do we need getter and setter? हमको getter और setter method का use कब होना है? See, normally we don't use getter and setter methods because already हमारा जो data member है वो public है. हमें बस object बनाना है class का, और अगर मुझे वो वेरिएबल लेना है तो मैं ऑब्जेक्ट बना के उस वेरिएबल को कॉल कर दूंगा, तो मुझे उसका वैल्यू मिल जाएगा. राइट, वेरी इजी. वी हैव डन दिस प्रोग्राम स्टिल नाउ, वी हैव डन इट, वी नेवर यूज्ड प्राइवेट एंड वी डिड दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स. राइट, वी हैव डन इट. बट अगर मेरा डेटा मेंबर प्राइवेट है, मतलब कि वो प्राइवेट लोकेशन पे है, नोबडी कैन एक्सेस इट, नॉट इवन द ऑब्जेक्ट. राइट, सो नाउ वी नीड समथिंग एल्स टू गिव देम द वैल्यू एंड टू फेच द वैल्यू, because objects can't do it. So at that time we need getters and setters. Getter will get the value. अगर उस वेरिएबल के पास कुछ वैल्यू है, मान लो 10 या 100, तो गेटर उस वैल्यू को लेके आएगा और सेटर उस वैल्यू को सेट करेगा. मतलब मान लो कोई वैल्यू नहीं है तो सेटर का फंक्शन उस वैल्यू को सेट कर देगा उस वेरिएबल में. कैसे करेगा? वी विल सी दैट राइट अवे. हेंस यू कैन मेक द क्लास रीड ओनली और राइट ओनली. तो बेसिकली इनकैप्सुलेशन में क्लासेस या तो रीड ओनली होती हैं या तो राइट ओनली होती है. रीड ओनली मतलब या तो आप सिर्फ उसको पढ़ सकते हो, मतलब या तो आप उसको उसका वैल्यू को सिर्फ फेच कर सकते हो. रीड ओनली मीन्स यू कैन ओनली फेच द वैल्यू, एंड राइट ओनली मीन्स यू कैन ओनली सेट द वैल्यूज, यू कैन गिव द वैल्यूज. ओके सर, आर दीज मेथड्स getter and setter मेड पर्पसली फॉर encapsulation? Yes, it is. ओके, बट इसका और क्या यूज है, आई टेल यू दैट लेटर ऑन. पहले एक प्रोग्राम देखते हैं, फिर इस गेटर और सेटर का ज्यादा यूज मैं आपको बताता हूं बाद में. ओके, हैव अ लुक एट हियर. सो सबसे पहला चीज यहां पे आपको ये देखना है कि यहां पे एक मेन क्लास है, मेन मेथड है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है. यू कैन सी दैट एस इज एन ऑब्जेक्ट विच इज गेटिंग क्रिएटेड. राइट, नाउ कैन यू सी इट? I don't know, some Wi-Fi problem is there. I hope you can see it. Okay, so have a look. We have created one object of pass by value, and then we have written s.setName, system.println, s.getName. Now please understand, आप अभी सोच रहे होगे, you will be thinking, where is this pass by value class, right? Where is this pass by value class? Please understand here, this is the first time I am doing this in my sessions, so please try to understand. यहाँ पे there is a package com.Ritwik Raj, right? There's a package. That means inside a package you can have different classes. So I have two class. I have one as a main class where I have written static void main method, and I have the second class which is pass by value, which is written here. And this particular pass by value is not having any kind of main method. This is just a normal class where it is having one variable which is a private data member, and I have one getter and I have one setter. I'll talk about this again, don't worry. But please understand कि ये दोनों क्लास एक दूसरे से बात कर रहे हैं. These two classes are talking to each other. Now please understand कि ये दोनों एक दूसरे से बात कैसे कर रहे हैं. ठीक है, must have be heard about access modifiers. मैंने आपको बताया था कि अगर डिफॉल्ट होता है तो बेसिकली इट विल रन, बिकॉज सेम पैकेज में अगर कोई क्लासेस हैं तो वो एक दूसरे से बात कर सकती हैं. एंड यू कैन सी हियर दैट दिस पर्टिकुलर क्लास इज अ पब्लिक एंड दिस वन इज अ डिफॉल्ट. राइट, सो ये दोनों भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं बिकॉज बोथ द क्लासेस आर इनसाइड वन पैकेज. अगर यहीं पे पास बाय वैल्यू किसी और पैकेज में होता और मैंने यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखा होता
तो ये काम नहीं करता बिकॉज दैट विल बी डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में दूसरे पैकेजेस से बात नहीं होती है. आई हैव टोल्ड यू दिस, राइट? सो दैट्स द रीजन we can do this. This is the first time I'm showing you, so make sure that you now know how to write a program. So pass by value basically यहाँ पे value एक object बना रहा है, and we are calling s dot set name. You can see set name here. Okay, now this is encapsulation. Let's try to understand ये program encapsulation कैसे हुआ. Encapsulation के दो रूल थे. आपको या तो अपने पूरे डेटा मेंबर्स प्राइवेट बनाने हैं, और उसके बाद आपको या तो आपको बेसिकली गेटर और सेटर बनाना है. So see here, I have one particular data member which is a name, which is a string data type, and it's private. So basically no other object can access this particular variable. मैं इसको directly यहाँ पे ऐसे object बना के we cannot write s dot name. We can't do that. It will not work. So what you have to do, you have to create a get name and set name. Let's understand what is this. So public string get name return name. Get name मतलब हमें name चाहिए. Name यहाँ पे है नहीं. बट अगर फ्यूचर में हम कुछ नेम का वैल्यू डाल रहे हैं तो मुझे वो नेम रिटर्न चाहिए अगर मैं इस मेथड को कॉल करूंगा. मतलब आउटपुट में मुझे ये चीज़ मिल जाएगा, मुझे ये नेम का वैल्यू मिल जाएगा. लेकिन गेट करने से पहले सेट करना पड़ेगा. सेट करने के लिए वी हैव दिस फंक्शन. सो एज एन पैरामीटर यहाँ पे नेम ले लिया, और अगर कोई भी वैल्यू पास होगा यहाँ पे तो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. दिस ऑलरेडी यू नो, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम. सो वंस दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज गेटिंग स्टोर्ड, that means in the name we got one value, and then we can fetch it. So we are giving a name here, s dot set name Vijay. So Vijay goes here, name becomes Vijay, class names also become Vijay, and then it is printing s dot get name. So it is printing s dot get name. That means it is calling s dot get name. ठीक है, s dot get name is getting called, so it will come here, it will return name, and it will print Vijay. So if I run this, आपको ऑब्वियसली मेन मेथड वाला क्लास ही रन करना पड़ेगा. यू कैन नॉट रन दिस पर्टिकुलर क्लास बिकॉज इसके अंदर मेन मेथड है. द हार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज हियर. सो यू आर गेटिंग विजय, राइट? दिस इज अ वेरी नॉर्मल एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन. लेट्स ट्राई टू रीड द कमेंट्स फर्स्ट. Sir, are these methods okay? I have taken that. What is the difference between set name and parameterized constructor? Obviously there is a lot of difference. K-Chicken, I don't know if you're a new student here, but if you can see my earlier sessions, I have explained about it. So basically constructor जो होता है, those are special kind of methods जिसका class से class के साथ नाम match होता है. So all the constructors have the same names as the class names. Set name is a method. It's a normal method. It's not a special method like constructor. It's a normal method. So constructor is different. Constructor is something which is a special method which is having the same name as the class name. But do we have any kind of... No, they are not doing the same thing. Constructor and this constructor methods doesn't do the same thing. Constructors have a different work. Constructor initializes the data variables and members and methods. Methods don't do that. Methods are there to just work off. That means अगर आप methods को कॉल करते हो तो बस उसको अपना काम करना है. अगर वो कुछ रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न करेगा, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो वो नहीं करेगा. That's it. But constructor does a lot of things, right? So please go ahead and watch other sessions. I think Ankita, Somu, you can understand what I'm talking about because you have seen my earlier sessions. So it will be great if you can see my earlier sessions. You will really get to know what is it. Sorry. Okay, perfect. So sir, what should I start, Angular or React? Which is most required for companies? I complete HTML, CSS, JS and Bootstrap for your front-end development course. Akshay, you can go for React directly. You can go for React because there are so many openings right now in React field. So please go ahead and do that. And do not just do the basic things of React. Do the React, native React, the route and all of those concepts so that you get a better job. That's the next step. Angular you can also do, but it's a vast topic. It'll take a lot of time for you. So if you don't have much time, if you just want to get a job, you can go ahead and learn React in just 15 or 20 days and you can
go ahead and take a job. You will get it very soon, okay? Because there are a lot of opportunities. You can get in a very good company as well. But Angular, there are some things like you will need at least 1.5 months to complete those topics, because it's a very vast topic in Angular. There are very vast topics in Angular, and also the job requirements in that field is there, but it's very lesser than React. So yeah, good option will be React. Okay, let's come back. So why do we do this set name and get name? See, obviously reason है क्योंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको नहीं यूज कर सकते. सो हमें कुछ मेथड चाहिए जिसके थ्रू वी कैन either set the value or get the value, right? Now this particular thing is much used whenever your data member is private, right? So एक चीज होता है जावा में which we call it as bean class, okay? I don't know if you guys know about it, but there's something called as bean class. Bean class is mostly used in all our software development projects which we do in Java, okay? If you go inside a company, or when you do a servlet project or a Java framework project, right? A big backend programming project, you will be using Java bean classes there. So basically Java bean classes are what? Java bean classes are one particular class, okay, which is having private data members, and it is having a lot of getters and setters. So let's say कि मेरे पास एक और यहाँ पे int करके एक value है, ठीक है? So what I have to do again? I have to do this thing again. मुझे ये चीज फिर से करना ही पड़ेगा. I have to do this again. What I have to do here now? मुझे यहाँ पे get I लिखना पड़ेगा, and I have to return I. ठीक है, वी नीड टू डू दिस. सो वाई आर वी डूइंग दिस? बिकॉज आई भी प्राइवेट है, सो उसके लिए भी गेटर सेटर होना चाहिए. सो व्हाट एम आई डूइंग? अगर आपके पास 5 वेरिएबल्स है, देन यू हैव टू क्रिएट 5 गेटर्स एंड सेटर्स फॉर ईच वन ऑफ देम. ओके, नाउ द रीजन ऑफ क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ क्लासेस आर वेरी इजी. डेटा एब्स्ट्रैक्शन में हेल्प होगा, डेटा हाइडिंग में हेल्प होगा, और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं. क्या क्या एडवांटेज हैं, वी विल नाउ सी अबाउट इट. सो ये जैसे क्लासेस होती है ना, इन क्लासेस को हम लोग बोलते हैं बीन क्लास, ठीक है? और ये बीन क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, क्योंकि सबसे पहली बात, आपके जो वेरिएबल्स है वो प्राइवेट हैं, तो ये कभी चेंज नहीं होंगी, कोई क्लास इसको एक्सेस नहीं करेगा. तो दीज आर योर ओन क्लासेस विच यू कैन यूज वेन एवर यू वॉन्ट. एंड इसका यूज करने का भी डेटा सिक्योरिटी में रीजन है. डेटा सिक्योरिटी मीन्स कि आपको ये मेथड्स यूज करने पड़ेंगे. So when you're calling these methods in any other class, then only the execution will come here and it will fetch the values, right? You are not doing everything inside one class, making everything public. You have data security there. So these are the concepts which is used mostly in your Java framework related things. So this is called as a bean class. Do remember this. This question can be asked in your interview, whether you know about Java bean class or not. This is what is called as bean class. Explanation is very simple. Classes which are having private data members and getters and setters methods, those are nothing but bean class. Now let's have a look at the one example. So you can see public class student, private hai mera variable. We have two methods, string set name, get name, because mera private sa variable. And then we are doing this. So main method में हम लोग ने एक student s बनाया object, and s का use करके पहले set किया फिर get किया. Same example, just a different set of class names and methods name. Okay. Let's have a look at advantage. What are the prerequisite for React? Prerequisite for React is the same thing which I think Akshay is saying, HTML, CSS, JavaScript and Bootstrap. ये चारों चीजें ही React के prerequisites हैं. Also JS ES6 जो मैंने आपको अपने front end programming playlist में पढ़ाया है, ES6, right, where closure and all of those topics comes in. So that is very important. ES6 is very, very important. ECMAScript 6, that's a version name of JavaScript. So that is very important. Bootstrap उतना जरूरी नहीं है. This is not a prerequisite of React, but Bootstrap is important for your for making your code very easy and simpler structure, right?
सर व्हाट इज पोजो? पोजो इज द सेम थिंग विच आई हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट. ठीक है, जावा बीन सेम थिंग इज पोजो. बट अभी बहुत लोग पोजो यूज नहीं करते हैं, सो देयर इज अ अल्टरनेटिव टू दैट. विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट या दैट इज ऑल्सो पोजो. सो एडवांटेज क्या है इनकैप्सुलेशन का? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. बाय प्रोवाइडिंग ओनली ए सेटर और अ गेटर मेथड यू कैन मेक द क्लास रीड ओनली और राइट ओनली. मतलब आप सिर्फ गेटर और सेटर का यूज करके you can say that whether that class will only give you the value or it will set a value. In other words, you can skip the getters or setter methods. Basically जब आपका sir you don't have playlist for competitive programming for beginners? No, I don't have any playlist for CP or DSA. I am mostly into the programming language concept parts, right? It provides you the control over the data. करेक्ट, आप कंट्रोल कर सकते हो डेटा को. सपोज यू वांट टू सेट द वैल्यू ऑफ आईडी विच शुड बी ग्रेटर देन 100 ओनली. यू कैन राइट द लॉजिक इनसाइड द सेटर मेथड. यू कैन राइट द लॉजिक नॉट टू स्टोर द नेगेटिव नंबर्स इन दी सेटर मेथड्स. सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, अगर आपका प्राइवेट है कोई वेरिएबल, लेट्स से आई है एक वेरिएबल या आईडी है एक वेरिएबल जो प्राइवेट है, तो ऑब्वियसली आप उसका वैल्यू सेट नहीं कर सकते या फिर आप उसको फेच नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गेटर सेटर बनाने पड़ेंगे. अब मान लो यूजर कहीं से उसमें नेगेटिव नंबर डाल रहा है, तो नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है, राइट? तो व्हाट यू कैन डू इन योर सेटर मेथड, यू कैन राइट अ इफ कंडीशन दैट इफ ए इज लेस देन 0 देन ये करो, अदरवाइज ये करो. तो नेगेटिव नंबर्स भी वहां पे नहीं जाएंगी. तो सेटर मेथड में हम लोग अपने कोड्स को चेंज कर सकते हैं, राइट? तो वो भी यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, सो दैट a wrong value cannot be kept inside a variable. इसका भी एक एग्जांपल है, we'll try to see that. It is a way to achieve data hiding in Java because other class will not be able to access the data through the private data members. Other classes will not be accessible. मतलब other classes आपके data members को नहीं छू सकते. Only your class is allowed to do that. The encapsulated class is easy to test. इसका ये भी एक है, टेस्टिंग बहुत ईजी से हो जाता है क्योंकि थिएटर सेटर यूज हो रहे हैं, डिफरेंट क्लासेस में इंटरप्ट नहीं कर रहा है, तो ईजी होता है यूनिट टेस्टिंग के लिए. यूनिट टेस्टिंग इज बेसिकली काइंड ऑफ टेस्टिंग. जब आप कुछ बनाते हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो आप यूनिट टेस्टिंग करते हो. मतलब उसका हर एक क्लास, उसका हर एक यूनिट को आप टेस्ट करते हो कि वो काम कर रहा है कि नहीं. सो इनकैप्सुलेट क्लास, दैट इज वाई वी क्रिएट जावा बीन. वही मैं आपको बता रहा हूँ, जावा बीन क्लास जब आप क्रिएट करते हो तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए आपका प्रोग्राम समझने को. सो दिस इज वॉट इज इन इनकैप्सुलेशन. अब यहाँ पे सिर्फ रीड ओनली क्लास बनाया गया है, तो यू कैन सी हियर जावा क्लास विच हैज ओनली गेटर मेथड्स. सिर्फ गेटर मेथड होगा तो वो रीड ओनली होगा, अगर सेटर होगा तो वो राइट ओनली होगा. तो रीड ओनली कैसे है, एक स्टूडेंट क्लास है, प्राइवेट है स्ट्रिंग कॉलेज IIT एंड पब्लिक स्ट्रिंग गेट कॉलेज एंड देन रिटर्न कॉलेज. तो व्हाट इज इट डूइंग, इट्स जस्ट अगर आप गेट कॉलेज को कॉल करोगे तो आपका कॉलेज का वैल्यू रिटर्न होगा. सो नाउ यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द कॉलेज डेटा मेंबर विच इज IIT. यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ रीड कर रहे हैं वैल्यू, हम लोग यहाँ पे सेट नहीं कर रहे हैं वैल्यू, वी आर जस्ट गेटिंग द वैल्यू. s.set कॉलेज अगर आप ये करोगे तो इट विल रेंडर कंपाइल टाइम एरर बिकॉज आपका सेट कॉलेज का कैसा फंक्शन है ही नहीं यहाँ पे. इट्स अ वेरी इजी थिंग. राइट ओनली क्लास में आपने सेट कॉलेज लिखा है, उसमें आपने एक पैरामीटर पास किया है कॉलेज का, एंड देन यू आर doing this dot college equal to college. So basically what is happening, you cannot get the value here, you cannot read it but you can write it. So basically आपने यहाँ पे एक वैल्यू नहीं दिया है तो यहाँ पे आप वैल्यूज डाल सकते हो. So if you are saying that system.println s.get college, ये आपको एरर देगा because get college is not there. Or if you are writing s.college, s.college is what? s.college is fetching the variable. You cannot do that because ये private है, your college data member is private, so you cannot fetch something like this, you cannot do this. ऑब्जेक्ट से आप प्राइवेट डेटा मेंबर को फेच नहीं कर सकते हो. सो व्हाट यू डू, यू हैव टू कॉल सेट कॉलेज. मतलब आपको ऐसे करना पड़ेगा, ये वाला चीज करना पड़ेगा. आप जैसे ये लिखोगे, बिट्स लिखोगे तो कॉलेज का जो वैल्यू है वो बिट्स हो जाएगा, लेकिन आप उसको रीड नहीं कर सकते, आपने बस वहां पे सेट किया वैल्यू को. तो इसको बोलते हैं राइट ओनली क्लास. अब मैं ज्यादा फोकस रीड ओनली और राइट ओनली में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ेगा कि व्हेन यू वांट वन ऑफ, आई होप आई एम नॉट स्टक, वाईफाई थोड़ा इश्यू कर रहा है, सो आई होप इट्स नॉट स्टक. ठीक है, तो बेसिकली वाई आई एम टीचिंग यू रीड ओनली और राइट ओनली, बिकॉज समटाइम्स इन आवर
in our project, in our software development project or any project which you're working on, we need some classes, we need some small classes which I want only to be read only or write only. We want such classes. ठीक है, कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ता है कि we only need one class which can only read things, which can only read the values, that's it. We do not want it to do any other particular thing. Or we want some classes which only needs to set some values, right? So ऐसे classes बनाने के लिए we need read only and write only. ठीक है? Now let's do some programs. Let's do some programs in our code and let's try to see how does it work. So एक program I have already showed you. Next program, let's try to. Okay, have a look at this one first. ये थोड़ा easy है. I'll try to make it much more complicated, but not now. So have a look at it. यहाँ पे main method नहीं है, okay? There is no main method here. There is an account class. This example also you can get anywhere. So you can see a private, all the variables are private, right? All the variables are private. And because all the variables are private, what are we doing? The next step is for us to create the getters and setters for everything. So we have getters and setters for account number. We have getters and setters for name. We have getters and setters for email. We have getters and setters for amount. So ये एक बढ़िया पोजो क्लास है या फिर आप बोल सकते हो जावा बीन क्लास है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ प्राइवेट है डेटा मेंबर्स और इसके अंदर सारे गेटर्स और सेटर्स हैं. यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर क्लास टू डू एनी काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, तो ये क्लास अपना एक अलग पोजीशन ले लेगा and your all other classes or other your main methods can access this because it is having getters and setters. तो अगर मुझे इसका एक particular main method लिखना है तो we can do that and we can write it here. तो यहाँ पे बेसिकली सेम चीज हो रहा है. वी हैव अ मेन मेथड, आई एम क्रिएटिंग एन ACC ऑब्जेक्ट ऑफ इट ऑफ द क्लास अकाउंट एंड देन वी आर setting the value first. So setting the account number, setting the name, setting the email, setting the amount, and then we are getting it. So you can see how we are getting it. सारे get वाले functions को एक साथ मैंने यहाँ print कर दिया है. तो obviously your whole data will get printed here. ठीक है, so this is also a एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन. अब समझते हैं कि इसको क्यों बोलते हैं रैपिंग अप ऑफ डेटा इन कोड इनटू वन सिंगल यूनिट. देखो ये एक सिंगल यूनिट है, क्लास जो ये अकाउंट है ये एक सिंगल यूनिट है जो कि यहाँ डायरेक्टली क्लोज हो रहा है. इनसाइड दिस वी हैव सम डेटाज विच इज इट्स ओन, राइट? सो दिस इज अ डेटा विच इज इट्स ओन, वी कैनॉट चेंज दिस. And we have some codes which is also its own and it's very easy to fetch the values or to set or to get the values, right? So that's why it's called wrapping up of data inside one single unit. ठीक है, ऐसा आप और जगह नहीं करते हो. और जगह आपके डेटा मेंबर्स प्राइवेट नहीं होती हैं, वो पब्लिक होती हैं. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था. आई विल आल्सो गिव यू वन मोर एग्जांपल. So that at least you can understand a different kind of set. So have a look at this one. So there's a main class, main method, there's an object, encapsulate, and object is setting the values of name, age, and role, and then we are just printing it. So same thing, and now we have encapsulate where all the things are private, geek name, geek role, geek age, everything is private, and then we have the get age, get name, get role, set age, and set name. So name का get यहाँ पे है and set, get age, set age, get role, where is set role? Set role. Same thing. So this is the same example. सब ऐसे use होता है encapsulation में. There is nothing different in this. All the examples are same. If you run this you will get the output as you can see, the name, age and roll number, everything you are getting. Let me see if I have any other kind of example which is doing something else or any exception which we can find. I don't think there's any exception. It's a very easy concept, that's why I took it in the last. So yeah, I want to show you this one. So remember I told you about one of the example where 100 value and if user is want to giving, if the user is willing to give a negative number, what will happen? So have a look at this.
we have this particular class where we have a private account number, private account balance, and then we are saying a data method here. And here in public void deposit data, what we have done, we have written a if condition. So if a is less than 0, it will show error. Otherwise, it will add that value to that, right? So this is also one of the main use of it. So you can have a getter and setter for your functions, like for your variables, and then you can set the data however you want. Suppose if somebody is willing to set a value of -100, they won't be able to, because there's a function already, there's a condition already, and that's why it will be able to check it, right? अगर कोई person value डाल रहा है more than 100 or maybe a string, so obviously that will not work. And also वो values भी यहाँ पे नहीं आएंगी क्योंकि ये सारे variables private हैं, right? So that is something which I wanted to explain. हाँ, यहाँ पे दो केसेस हैं. सो बेसिकली अगर कोई मेन मेथड से अकाउंट का कोई ऑब्जेक्ट बना रहा है, लेट्स से ए इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट अकाउंट, राइट, और दे आर राइटिंग ए डॉट अकाउंट बैलेंस इक्वल टू -100, दे वोंट बी एबल टू डू इट. अगर आपने किसी अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है ए एंड देन यू आर डूइंग ए डॉट अकाउंट बैलेंस इक्वल टू -100, यू कैन डू दैट बिकॉज दीज आर प्राइवेट. सेकेंड थिंग आप क्या कर सकते हो, आप मेथड कॉलिंग करोगे. व्हाट यू विल डू इज यू विल कॉल दिस ए डॉट डिपॉजिट एंड देन विल पुट -100 हियर. तो यहाँ पे आके वो भी एरर दे देगा. सो देर आर पॉसिबिलिटीज, टू पॉसिबिलिटीज कि आप माइनस वैल्यूज या रॉन्ग वैल्यूज आप नहीं डाल सकते हो, राइट. सो दिस इज ऑल्सो अ कैप्सूल वेयर वी हैव सम ऑफ द प्राइवेट डेटा मेंबर्स एंड द कोड टुगेदर इन ए सिंगल यूनिट. ठीक है, दिस इज व्हाट इज इनकैप्सुलेशन ओवरऑल. सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम बिकॉज इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने क्या क्या ऊप्स कॉन्सेप्ट में सीखा है. ठीक है, any questions here first of all, because oops concept बहुत छोटा था, so I just wanted to complete this very fast, so it's done. And now we'll talk about the revision of oops concept. We'll try to see what are things we have covered here and we'll mention it here. Okay, so आप लोग भी मेरा मदद करोगे, whoever is there, whoever is watching, all my students who are watching it from the first time, from the beginning of this playlist, please give me a heads up अगर कुछ मैं मिस कर देता हूँ. Okay, see, interviews में listen to this carefully because this is very very important. इंटरव्यूज़ में जब भी आप जावा इंटरव्यूज़ में जाते हो, नॉर्मल एमएनसी कंपनी के लिए या टॉप एमएनसी कंपनी के लिए या ऐसे कंपनी के लिए जो आपको सिर्फ एक नॉमिनल पैकेज दे रहा है एंड दे वांट कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जावा का आना चाहिए, राइट. सो व्हाट दे रिक्वायर इज, व्हाट इज देयर मोटिव टू गो फॉर एन इंटरव्यू इज they want you to know basic concept of oops. Their main fundamental thing is only to have oops concept in anybody's mind. अगर आपके दिमाग में oops concept का अच्छे से बैठ गया है कि what is it, how is it used, चाहे वो कोई भी language हो, is it a Python, is it Java, is it C++, they just want oops concept to be there in your brain. If it is there, they will try to ask some of the concepts related to it directly. वो थोड़ा question करेंगे like what is polymorphism, can you tell me about it. Just that. Later on when they will get to know कि okay, you know polymorphism, they'll try to tell you to write a code in polymorphism, or they'll try to give you a scenario where in those examples one of the oops concept will be used, right. एक scenario दे दिया जाएगा आपको, let's say कि you have one class and this and that is there and you have to now access that, so which oops concept will be perfect here. So you need to figure out कि उस सिनेरियो में कौन सा उस कॉन्सेप्ट बेहतरीन काम करेगा एंड हाउ यू विल कम अप विद दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन. तो वो कुछ काइंड ऑफ क्वेश्चंस होती हैं. अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज समथिंग लाइक प्रोग्राम बेसिक्स, नॉर्मल प्रोग्राम्स लिखने के लिए कि बस बता दो मुझे कि ये क्या होता है, राइट. ओनली दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड हियर. ओके, नाउ वंस दे डू दैट, नो मैटर व्हाट, आप अगर प्लेस हो भी जाते हो इनसाइड दैट कंपनी, यू नेवर नो कि आपका वहाँ पे किस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में रोल रहेगा. मतलब कि आपका जो डोमेन है वो जावा ही रहेगा या कुछ और रहेगा. सपोज दैट योर पर्टिकुलर डोमेन इज, मतलब आपका जो नॉलेज है वो पाइथन में है, ठीक है. यू डो नॉट नो जावा, यू नो पाइथन. सो इफ यू आर गोइंग फॉर अ पाइथन इंटरव्यू एंड दे आर हायरिंग फॉर अ पाइथन पोजिशन, ऑब्वियसली यू विल बी वर्किंग फॉर पाइथन पोजिशन फॉर द फर्स्ट और द सेकेंड और मे बी द थर्ड ईयर एज वेल, ठीक है. लेकिन एक टाइम आएगा
when the company will shift into different domain, or maybe their projects are coming up from a different domain, not from Python. It can happen. It happens to various companies. At that time, if you do not know Java, you have to learn that. They will provide you the free courses, they'll provide you that free things, and they will tell you that please go ahead and learn this. You have to give an exam and you have to crack it so that you can be there in that project. So आपको अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी वहां पे मिलेगा, राइट? बट फॉर दैट फर्स्ट कंपनी टू क्रैक यू हैव टू लर्न वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही पकड़ो, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मत पकड़ो, ठीक है? Now if you know about Java in the beginner phase, if you know about Java, what you will do, you will go ahead in the Java interview part in a position, and maybe later on after 1 year your whole company is changing its domain into Python. So आपको Python पढ़ना पड़ेगा. You have to adapt to new situations. You have to do that. But ये oops concept हमेशा सेम ही रहेगा. Yes or no? चाहे वो कोई भी आगे का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, oops concept will be the same. Correct? So दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस oops कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसका रिवीजन भी करवा रहे हैं, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज देयर, विच विल बी देयर. थोड़े बहुत चेंजेस आएंगी डिफरेंट लैंग्वेज होने के कारण, बट द कॉन्सेप्ट विल बी द सेम. सो अगर आप पाइथन जानते हो, यू मस्ट बी नोइंग कि पाइथन में भी इनहेरिटेंस है. सॉरी, पाइथन में भी oops कॉन्सेप्ट है. पाइथन में भी देयर आर थिंग्स जो जावा में काम करती है, वैसे ही सिमिलरली वो पाइथन में भी काम करती है. इट्स जस्ट दैट उसका शॉर्टर सिंटैक्स होता है, बहुत ईजिली वो लिख सकते हैं. जावा में बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं. जावा में बेसिकली आपको क्लास लिखना पड़ेगा, स्टैटिक मेन बनाना पड़ेगा, बहुत चीज़ें बनानी पड़ेंगी. बट पाइथन में आप डायरेक्टली कर सकते हो. इसलिए पाइथन इज़ अ वेरी ईजी लैंग्वेज जो बिगिनर्स को लर्न करना चाहिए. कमिंग टू दी नेक्स्ट पार्ट. सो oops concept, we know that you have to understand the oops concept, right? Let's understand what else. So बहुत ये confusion है कि oops concept के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. Whether class and object also comes inside oops, or inheritance also comes inside oops, right? There are so many tutorials which say that उस concept के अंदर 6 चीज़ें आती हैं: class, object, encapsulation, polymorphism, inheritance, abstraction, right? कभी कभी बहुत लोग interface भी डाल देते हैं उसके अंदर, right? But the exact oops concepts are only 4, which are polymorphism, inheritance, abstraction, and encapsulation. Only these. Classes and objects are a part of oops, but it is not considered as one of them because those are not concepts. Those are one thing which is needed, which is required. अगर encapsulation करना है तो class object होना है. अगर आपको कोई भी oops प्रोग्राम लैंग्वेज लिखना है तो आपको class and object होना है, right? So that's a necessary thing. That's an obvious thing. So we do not count that. Interface को भी आप काउंट नहीं करते हो, क्योंकि interface का आना was a different situation. Multiple instance was not achievable. That's why interface came into the picture. Nothing else, right? So again, it's not an oops concept. It's just one concept which is inside inheritance. ठीक है? So make clear about that. Next thing, बहुत important keywords जो आपको पता होनी चाहिए in an interview. Super keyword, this keyword, enum. These are the most important ones which are there. So super keyword, this keyword और enum, ये तीनों एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज के परस्पेक्टिव में, क्योंकि बहुत छोटे टॉपिक्स हैं. MCQs में नहीं पूछा जाता नॉर्मली. इट इज़ मोस्टली आस्क्ड इन फेस टू फेस और अ वर्चुअल इंटरव्यू, ठीक है? क्योंकि दे वांट कि यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ दिस, बिकॉज दिस कीवर्ड, सुपर कीवर्ड विल बी यूज्ड इन योर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, राइट? enum भी यूज होता है. एंड देन द नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज, जो मैंने आपको बताया हुआ है, सुपर कीवर्ड और दिस कीवर्ड मैंने आपको रिसेंटली पिछले 2 सेशंस में बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ ट्राई करवाया था. सो आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट दिस. enum का भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल गया होगा. पिछले क्लासेस में मैंने आपको enum भी करवाया है. नेक्स्ट थिंग इज नॉर्मल बेसिक लॉजिक कॉन्सेप्ट्स. लॉजिक कॉन्सेप्ट्स इन द सेंस जो आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स होती हैं, ये सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसका ये पूरा लॉजिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, बट उसका लिखने का तरीका चेंज हो जाता है, राइट? तो सपोज मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होता है, बेसिकली आई नो ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट? एंड ऑल द डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर हैविंग दीज लॉजिक कॉन्सेप्ट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग, स्विच. इनफैक्ट जावास्क्रिप्ट के पास भी है, टाइपस्क्रिप्ट के पास भी है. तो ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस है जिनके पास ऐसा है. कभी कभी आपने देखा होगा कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो when I write any particular kind of conditional statement, sometimes I do write it wrong, because
आई गेट कन्फ्यूज विथ वॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई एम राइटिंग. मैंने कभी कभी पाइथन का सिंटैक्स लिख देता हूँ, कभी कभी सी का लिख देता हूँ, राइट. सो ट्राई टू ओनली गो विथ वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सो दैट आपको सिर्फ उसका सिंटैक्स पता हो. दैट्स वाई, दैट इज ऑल्सो वन रीजन वाई पीपल से दैट डू ट्राई ओनली वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बट इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसी से पूरा कॉन्सेप्ट का बनेगा. जो भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस पूछी जाएंगी, फिबोनाची, फैक्टोरियल, वो तो बहुत कॉमन हो गया. बाकी के और भी जो टफ क्वेश्चंस जो आप लीड कोड में सॉल्व करते हो, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो ये आपको आना चाहिए. नेक्स्ट थिंग विच इज देयर इन योर जावा इज कंस्ट्रक्टर्स. इसके बेसिक्स पे आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा. ऑब्वियसली एक नॉर्मल डिफॉल्ट क्वेश्चन भी डाला जाएगा कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है. क्योंकि वो C++ में होता है. जावा में डिस्ट्रक्टर टाइप कुछ नहीं होता है. सो डू नॉट गेट इन टू दैट पर्टिकुलर वाइब. अगर होता तो मैं पढ़ाता, बट देयर इज नथिंग कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टर्स. सो बेसिकली देयर इज कंस्ट्रक्टर विच इज हेल्पिंग टू इनिशियलाइज आवर डेटा मेंबर्स एंड डेटा मेथड्स. ठीक है. अगेन इसका भी पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज दिया गया है आपको. आई होप यू नो दैट कैसे इसमें कॉलिंग होता है. अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट बना रहा हूं बस, दैट मीन्स आई एम जस्ट राइटिंग स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, दैट्स इट. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. ओनली इन दैट लाइन ऑल्सो कॉलिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर इज हैपनिंग, राइट. सो ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि वेरियस मैनी टाइम्स पीपल डोंट नो अबाउट इट कि अगर आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो भी आपका कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हो रहा है. अगर आप कंस्ट्रक्टर कॉलिंग नहीं कर रहे हो, मान लो कि आप ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हो, तो भी आपके कोड के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, राइट. I have told you that there are 3 constructor: default, no argument and parameter. Please do not get confused into this. अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हो तो भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली आपके जावा कोड में रहता है, जो आपके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है उसके डिफॉल्ट वैल्यू से. इंट का वैल्यू 0, फ्लोट का वैल्यू 0.0 एंड सिमिलरली लाइक अदर डेटा टाइप्स. अब ये जो चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में ही पूछा जाएगा. देयर विल बी वन क्वेश्चन और एमसीक्यूज में 4 ऑप्शंस रहेंगी एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि इसका आउटपुट क्या होगा. और मे बी यू विल ओनली टिक दैट वन जिसमें नल 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 लिखा है. सो प्लीज डोंट ट्राई टू डू दैट. सो कंस्ट्रक्टर इज वन ऑफ द टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वी हैव वन ऑफ द टॉपिक राइट नाउ, जो मैंने आपको बताया था मल्टीपल इनहेरिटेंस का. इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. यू नो दैट, राइट. यू नो दैट इसके अंदर वी हैव इंटरफेस, वी हैव एब्स्ट्रैक्शन, वी हैव ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट. नारी मैं प्लीज अंडरस्टैंड, जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, व्हेन आई वाज गिविंग एन इंटरव्यू फॉर जावा, वन थिंग आई अंडरस्टूड कि आपका आंसर डिपेंड करता है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा. दिस इज देयर फॉर एवरीवन. आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो या आप जिस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, योर आंसर डिपेंड्स ऑन व्हाट विल बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपने अभी तक पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया मेरे साथ. यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स विच इज देयर इन ऊप्स राइट नाउ टिल नाउ, राइट. Now let's say if I ask you one question, let's say if I'm asking what is polymorphism, right? So what you will say? You'll say about overloading and overriding concept, right? Or otherwise what you will do, your second attempt is you will say that static and dynamic. अगर आप static dynamic बोलते हो, दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि static का मीनिंग और dynamic का मीनिंग क्या होता है. ठीक है. अगर आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हो, तो दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि रन टाइम क्या होता है, कंपाइल टाइम क्या होता है. अगर आप ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग बोलते हो, तो ये क्वेश्चन आएगा कि ओवरलोडिंग कैसे होता है, कैन यू राइट अ प्रोग्राम. ओवरराइडिंग कैसे होता है, कैन यू राइट अ प्रोग्राम. व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग ओवरलोडिंग कैसे होता है, दे विल आस्क यू अबाउट कंस्ट्रक्टर. ठीक है. एंड देन दे विल आस्क यू अबाउट कंस्ट्रक्टर. हो गया. फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पूछेंगे. देन दे विल ट्राई टू गेट इनटू ऑपरेटर ओवरलोडिंग. वो सारे तरीके के ओवरलोडिंग दे विल ट्राई टू आस्क यू. वंस दे विल बी फाइन विद इट, दे विल मूव टू ओवरराइडिंग. ओवरराइडिंग में फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है, क्योंकि ओवरराइडिंग में इनहेरिटेंस होता है. आप एक्सटेंस लिखोगे, एट दैट टाइम इटसेल्फ दे विल आस्क व्हाट इज दिस एक्सटेंस, कैन यू एक्सप्लेन. once they'll try to jump in, once you will try to just say that extends keyword is used, they'll move into inheritance concept. They'll try to say that which inheritance is not possible in Java. Once you say there is one which is multiple inheritance, they'll get to know that you are saying a wrong answer, because every inheritance is possible in Java, right? So आपको बहुत केयरफुल रहना है ये सब क्वेश्चंस में, बिकॉज आपको पता है कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट जावा, यू नो एवरीथिंग. They will try to trick you. They will try to ask questions which you think that it's right answer, but it is not. So try to get those things correctly. Try to see कहाँ पे उनके प्रोग्राम में एक्सेस मॉडिफायर यूज हो रहा है,
प्राइवेट हो रहा है, प्रोटेक्टेड हो रहा है, क्या हो रहा है यूज, ट्राई टू सी दैट वेरी क्लियरली। ऑब्जेक्ट बन भी रहा है या नहीं, सिर्फ स्टूडेंट एस लिखने से नहीं होता है। You have to write the full syntax to create an object. A student s equal to new student. Everything you need to write to create that particular object, right? Also, जब अब वो आप multiple inheritance में आओगे, they will ask you about how to solve that multiple inheritance का problem. Then you will talk about interface. But आप interface को normally explain नहीं कर पाओगे, because interface को explain करने के पहले abstraction मालूम होना चाहिए. तो they will jump to abstraction. They'll try to talk you about abstract classes. They'll try to say कि क्यों नहीं यहाँ define कर सकते, आपको वो भी बताना पड़ेगा. क्यों ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस का, आपको वो भी बताना पड़ेगा, राइट? फिर इसमें कंस्ट्रक्टर का क्या रोल है, ऑल दोज थिंग्स विल बी कनेक्टेड, और आपका इंटरव्यू बहुत लंबा चलेगा, सो दैट दे कैन गेट एन आइडिया कि यू नो दी कॉन्सेप्ट, राइट? अगर आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट, सी देर आर टू थिंग्स, अगर आपको ये पूरा कोर कॉन्सेप्ट आता है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन इट, यू कैन गो हैड एंड ट्राई टू गिव योर आंसर्स ओनली इन दैट मैनर कि आप इंटरव्यूअर को वही क्वेश्चंस पूछने बताओ जो आपको आता है. लेट्स से कि आई नो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, आई नो पॉलिमॉर्फिज्म, आई नो एब्स्ट्रैक्शन, आई नो इंटरफेस, बट आई डू नॉट नो एक्सेप्शन हैंडलिंग, आई डू नॉट नो फाइल हैंडलिंग, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने आंसर जो भी मुझे पूछा जा रहा है, लेट्स से मुझे पूछा जा रहा है कि कितने टाइप ऑफ इनहेरिटेंस हैं, तो मैं उनको ज़बरदस्ती सबसे पहले बोलूँगा मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्योंकि मैं जानता हूं कि इफ आई एम सेइंग मल्टीपल इनहेरिटेंस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑन मल्टीपल इनहेरिटेंस, एंड आई नो व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, आई नो द होल थिंग अबाउट मल्टीपल इनहेरिटेंस. सो आई एम एक्चुअली प्लेइंग विद हिम, आई एम एक्चुअली डिजाइनिंग माई आंसर्स इन सच अ मैनर दैट वो एक्सेप्शन हैंडलिंग तक ना पहुंचे, क्योंकि मुझे वहां पे दिक्कत है. तो यू हैव टू वेरी बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट आप क्या आंसर दे रहे हो. गलती से भी अगर आपने कहीं पे थ्रेड बोल दिया, क्योंकि दिस हैपेंड विथ मी मेनी टाइम्स, स्ट्रिंग पे क्वेश्चन आता है, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर पे जैसी क्वेश्चन आता है, दे विल ट्राई टू आस्क कि दोनों में डिफरेंस क्या है, एंड यू विल से कि इसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, इसमें सिंक्रोनाइजेशन होता है, एंड देन द थ्रेड वर्ड विल कम. वंस ये थ्रेड वर्ड आ गया, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑन मल्टी थ्रेडिंग. What is multi-threading? What is daemon thread? What is these all things? And you will get stuck because वो थोड़े hard concepts हैं. Maybe if you're very confident, you can give the answer, but sometimes this happens कि you must not be knowing about it. So that's why answers whichever you're giving, you have to be very strict about it. Play with it. आप सिर्फ उसी concepts का नाम लो जो आपको आता है. गलती से भी कुछ ऐसा concept का नाम मत लो जो आपको confused है आप जिसमें, या आपको नहीं आता है, right? ठीक है? इवन इन प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज, राइट, जब आपको बोला जाए फिबोनाची का लिखने के लिए, so when you're writing फिबोनाची, do not try to give examples कि जैसे फैक्टोरियल में रिकर्शन होता है वैसे फिबोनाची में भी कर सकते हैं. डोंट डू दैट, बिकॉज देन दे विल मूव इनटू फैक्टोरियल एंड दे विल डीप डाउन गेट इनटू इट. सो डोंट ट्राई टू गेट इनटू अ सिचुएशन वेयर इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड. टेक इट वेरी इजी. वो खुद 15 मिनट्स में इरिटेट हो जाएगा, एंड देन maybe they have several other students to take interview. So in 15 minutes, when you're just talking and you're saying all the answers very quickly, वही चीज revolve होते रहेगा, and your interview time will get finished, you will get placed. Plan this because see, you guys are beginner and you have to do this right away, क्योंकि interview में, I know when you are in front of the interview, it's very obvious that you will be afraid, and these plannings will not come in your mind. But once you give 10 interviews, 11 interviews, when you get rejected, right, then these things comes in. You will be in confidence. आपका पूरा इंग्लिश कम्युनिकेशन ठीक हो जाएगा, आप बहुत कॉन्फिडेंटली स्पीक कर पाओगे, एंड यू कैन डू दैट, राइट? यू कैन फ्रेम योर क्वेश्चन, यू कैन फ्रेम योर आंसर्स इन सच अ मैनर जो आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि अब आपको रिजेक्शन से डर नहीं है. यू हैव ऑलरेडी रिजेक्टेड 12 टाइम्स, so there is no such thing कि आपको रोना आ रहा है या कुछ आ रहा है, राइट? यू आर ऑलरेडी रिजेक्टेड मेनी टाइम्स. इसमें भी रिजेक्ट हो जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा, वी हैव नेक्स्ट कंपनी, राइट? सो वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो बिल्डअप हो जाएगा, एंड देन यू कैन प्लान योर आंसर्स इन दैट मैनर कि इवन इफ दिस कंपनी इज नॉट देयर विद मी, व्हाट एल्स, what will happen, I'll get a next company, right? So that is one thing which you need to understand when you're giving an interview. So where do you have given Java interview? Have applied for Oracle also? It was long back, 3 to 4 years back. So I have given interviews in Accenture, Infosys. That's a placement kind of opportunity which I got.
not in Oracle, but yeah, all those companies which comes in placement on campus, top MNCs, every company I've given that, and that's why I have this experience which I'm sharing here, right? Uh, not for Fang, not for Fang, because Fang companies is not my thing. I mean, I'm not into that. I'm not into DSA and all. So, right, that's what. Soon I'll be coming with the Fang interviews also, but I need experience for that, so I cannot just give you false promises. So we will be doing that as well, but later on, not now. So yeah, that's what is the main thing which you need to care about. See, people in interviews are not very strict. They do not want to you to know everything. Okay, they just want you to know the logic, the ability to write a code, and to be confident. That's it, nothing else. Okay, if you know the concept, if you can write a logic very clearly, छोटे में अगर आप कोड लिख देते हो, लंबा प्रोसेस नहीं कर रहे हो, उसको खींच नहीं रहे हो, that's fine. Even if somebody is, yes, I'll teach thread in this series. Thread is there. Multi-threading concept. ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, मल्टी-थ्रेड, इसको छोड़ नहीं सकते. तो आई एम कवरिंग दैट, डोंट वरी. ये उस कॉन्सेप्ट खत्म होना था बस. सो आई जस्ट डिड दैट. आफ्टर दैट आई थिंक अभी आज का इवनिंग वाला सेशन इज एक्सेप्शन हैंडलिंग. सो आई एम कमिंग अप विद दैट. एक्सेप्शन हैंडलिंग में आई विल कंप्लीट एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. नॉट इवन वन पर्टिकुलर टॉपिक आई एम गोना लीव. आफ्टर दैट मल्टी थ्रेडिंग आएगा, फिर इनर क्लासेस, नेस्टेड क्लासेस आएगा, ऑब्जेक्ट क्लास आएगा, सिलेशन आएगा. 31st तक इट विल बी कंप्लीटेड, डोंट वरी. Fine. So those are the things which you need to take care about. Again, next things which you need. So as I said, all the questions are very relatable. So please try to answer in such a manner कि आप फंस ना जाओ. That's it. ठीक है. बीच बीच में जावा का कोई इंटरव्यू आ रहा है, आपने बीच में बोल दिया कि सर आई नो पाइथन ऑल्सो. डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट. अगर आपने बोला आई नो पाइथन ऑल्सो, ट्रस्ट मी, इंटरव्यूअर्स के माइंडसेट में यही रहता है कि हाउ दे कैन गिव अ such kind of question which will make you confused, because they want to see कि आप उस confusion से कैसे निकलते हो. They want to see that. So they will try to give you some questions which are very tricky and will try to confuse you. So if you are giving them the opportunity to do that, they will not leave it, right? They will take a chance. So अगर आप बोल रहे हो मुझे Python आता है, they are not going to ask you कि Python में println कैसे लिखते हैं ना, print कैसे करते. They won't ask you that. They'll ask you the most trickiest question in Python which they know in their company, क्योंकि वो भी लर्न कर रहे हैं कंपनी के अंदर. दे आर ऑल्सो डूइंग समथिंग. थिंक हाउ व्हाट दे आर डूइंग. इफ आई एम टेकिंग एन इंटरव्यू, क्या चल रहा होगा मेरे माइंड में. सो ट्राई टू थिंक दैट एंड देन प्ले, गिव अ शॉट फॉर इंटरव्यू. रिजेक्शन से कुछ नहीं करना है. रिजेक्शन इज जस्ट अ फेज. यू विल लर्न व्हेन यू गेट रिजेक्टेड. फर्स्ट कंपनी हो, सेकेंड कंपनी हो, 44th कंपनी हो, 60th कंपनी हो, you don't have to be thinking like कि रिजेक्शन हो गया, रिजेक्शन हो ही जा रहा है 3 महीने से. वो सब को चिंता नहीं करना. there are a lot of companies, there are a lot of company abroad, there are a lot of opportunities. So there are a lot of things. Now next thing which we have understood here in our rules concept is overloading and overriding. Again, I am saying that again that these are the concepts. These are not the types of polymorphism. Types of polymorphism का नाम different है. Concepts are same. Concepts are the same which is used in those type of polymorphism, but those names are different. That is static and dynamic. I hope you remember that. I've given you one homework also कि इसको static और dynamic क्यों बोलते हैं. So I hope you have found that out as well. So this is one of the thing which is very important. इसको एक्सप्लेन करने बहुत बार बोला जाएगा, इसमें प्रोग्राम्स भी लिखने बोली जाएंगी. So please try to do that. Next thing, exceptional cases. ध्यान से exceptional cases को पढ़ना है. This is very important. मैंने आपको सारे cases बताए हुए हैं यहाँ पे. Static में कौन सा केस होता है. Oh yes, sorry. यहाँ पे कीवर्ड में static भी आएगा. And final. I missed it out. Static में क्या एक्सेप्शंस होती हैं, सुपर में क्या एक्सेप्शंस होती हैं. मैंने आपको कल ही बताया था सुपर में क्या एक्सेप्शन है, राइट. बाय डिफॉल्ट भी सुपर लग जाता है, तो सुपर लिखने का जरूरत नहीं होता. सो दोज आर सम ऑफ द एक्सेप्शन केसेस. वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज बिकॉज इसी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन पूछी जाती है. आपको लगेगा कि कोड बहुत सिंपल है, मुझे आता है यहाँ पे क्या होगा, बट आंसर वो नहीं होगा. सो ट्राई टू फाइंड आउट ऑल पॉसिबल एक्सेप्शनल केसेस विच इज देयर इन जावा. एज आई सेड, जावा इज अ काइंड ऑफ अ
पागल लैंग्वेज, सो यू नो कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. सो ट्राई टू फाइंड दैट. अगर कुछ और भी एक्सेप्शन केसेस आपको मिल रही हैं तो ट्राई टू गेट दैट कॉन्सेप्ट एज वेल. बट मेरे से जितना मिला, आई हैव एक्सप्लेन यू दैट इन मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. सो प्लीज ट्राई टू डू दैट. हैश मैप्स एंड एरे लिस्ट कलेक्शन टॉपिक आएगा. आई थिंक 31st इज द डे व्हेन आई एम कमिंग अप विथ कलेक्शन. यस, 31st इज द डे. 31st को बहुत सारे सेशंस होने वाले हैं. सो कलेक्शन इज द टॉपिक विच इज कमिंग ऑन दैट डे. ऑल्सो आई थिंक array list, linked list, queues, set and maps, these all are coming on that day itself. Don't worry, those will be covered because I have some examples which I want to explain you so that आप easily उसको understand कर पाओ. And I can't wait to share those examples with you. आज रात का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई एम गोइंग टू कवर एक्सेप्शन हैंडलिंग और उसको एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन ए ईजी वे, क्योंकि बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग कब होता है. सो प्लीज़ ट्राई टू ज्वाइन द नाइट सेशन विच इज़ एट 8 PM. सेशन कैंसिल नहीं होगा. आई विल ट्राई टू टेक इट बिकॉज एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ अ बिग टॉपिक. इट विल बी ऑफ 2 hours. इट्स अ वेरी बिग टॉपिक. देयर आर सो मेनी थिंग्स देयर. सो प्लीज़ ट्राई टू ज्वाइन इट. उसमें ट्राई, कैच, थ्रोज, फाइनली, all of these things I'll tell you how it works with the code so that you can understand it. Okay, एग्जाम्पल्स भी दूंगा so that इंटरव्यू में आप उस एग्जाम्पल को यूज करके इंटरव्यू क्रैक कर पाओ इजी एक्सप्लेनेशन के साथ. ठीक है. सो दिस सेशन वॉज ओनली दिस मच बिकॉज इट वॉज जस्ट अ रिविजन एंड आई होप यू गॉट what is encapsulation. So please join the telegram channel. Telegram link is also given in the description. You will get to know about all the notifications will be coming up in the telegram channel when I'm coming up with the session and when I'm not. So please do join that. Also please do subscribe to the YouTube channel which is CodeBeyond and hit the notification bell so that you get to know about it. Okay, and also please do like and share the session so that more and more number of people will get to know about it. And sir, we have a coding session at 3 PM also. Yes, we have a coding session at 3 PM. Let's see if we can do that because exception handling is one of the topic जो मुझे करवाना है. So अगर मैं 3 PM सेशन ले लेता हूँ, I'm not sure whether 8 PM हो पाएगा कि नहीं. So let me think. I want exception handling to be taken first क्योंकि coding session बाद में कर सकते हैं. Main topics पहले complete करना था. So that is my plan. If coding session is happening at 3 PM, you will get a message in Telegram. राइट, सो डोंट वरी अबाउट दैट. अगर वो सेशन होगा तो आपको मैसेज आएगा. बट एक्सेप्शन हैंडलिंग इज देयर इन 8 PM. दैट इज फाइनल. I just can't wait to take that session. So please join at 8 PM so that exception handling you can understand. बहुत oops we have studied. Now let's talk about some real concept in Java. ठीक है. Yeah, that's what I'm thinking because that's a concept and concept clear करना ज़्यादा important है. कोडिंग सेशंस है. कोडिंग्स यू कैन गेट इन गूगल एनीवेयर. सो लेट्स ट्राई टू कंप्लीट द कॉन्सेप्ट फर्स्ट. सो थैंक यू सो मच गाइस. एनी विच वेज अगर मैं सेशन लूँगा तो आई विल लेट यू नो अबाउट इट. सो थैंक यू सो मच. विल मीट यू सून एंड बाय बाय. टेक केयर.